Labor market changes in India, 2005 to 18. It is the reading written by Jayan Thomas. It's a beautiful reading. उन्होंने इस रीडिंग के अंदर he has been talking about that our labor market is going through various changes. And he is looking at it, those changes he is looking at from the labor supply side and the labor demand side, both. So he says this, that if you look at Indian labor market, it is going through significant changes. How working age population has been increasing. So we are in that part of demographic dividend where the proportion of people who are in the working age, they are more than the people who are dependent. So size of the working age population has been increasing. But the question is that, are we providing these working age people with enough and decent job opportunities? That's the question. Also, then there is the another thing which is affecting the labor market is that more young people, they are enrolling in school and college education. Now, for the time which they are enrolling in college and school education, they are not the part of the labor force at that time, right? So they're not earning anything, but they're developing their skills. So they have a different aspirations for the kind of the jobs which they want to be in. So their aspirations, just because they have attended few years in school and college, their aspirations for the kind of the job which they want, that has changed. And the young workers in the rural areas, they are moving away from agriculture due to both push and pull factors, and we will look at what are those push and pull factors in this reading. That the proportion of people who were employed in agriculture, that has been falling, and the proportion of people who are employed in the other non-agricultural sector over the time, that is increasing. Well, if you look at the kind of the jobs which are being created, we are facing a problem. We're facing a problem because the working age population is increasing a lot, but at the same time, we have not been able to increase the decent jobs, the amount of the decent jobs for them, right? Secondly, that because young adults are enrolling more and more into education, so the kind of the jobs which these educated youth would want, again, the country has not been able to create that, or it is a problem for us. So the next question which is going to arise is that, fine, fair enough. More and more people are getting educated. Working age population is also increasing. Naturally, agriculture cannot employ everyone, and there are the problem of disguised unemployment in agriculture. So the other sectors apart from agriculture, have they been able to employ these people? These sectors which are apart from agriculture, you will find is that who are demanding labor. So there are many sectors which are demanding labor, but the demand for labor since mid 2000s, that is less than the potential supply, particularly for women. So जहां तक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात है, तो जो उसकी डिमांड है वो कम हुई है, फीमेल लेबर डिमांड कम हुई है, लेकिन फीमेल लेबर सप्लाई बहुत है। ये हमने देखा मिड 2000 से, और 2012 के बाद ये प्रॉब्लम और ज्यादा ग्रेव हो गई। ना ही सिर्फ लेबर डिमांड विमेन की कम हुई, इवन मेन की भी कम हो गई, और लेबर सप्लाई ज्यादा है। So labor supply is more for both men and women, but labor demand is less in the other non-agricultural sector. Agriculture में तो fall हो ही रही है जो employment है, but in the other non-agricultural sector also, they have also not been able to create enough demand for the labor. That is one thing. Now, can you also say that ठीक है, चलो ये तो एक बात हुई, growing size of working age population है। जो दूसरी बात है वो ये है that people are getting more and more education, right? So if they're getting more education, naturally they're not the part of the labor force at that time. They're not working at that particular time for the time they are getting educated. So can this phenomena that there is an increase in
school enrollment, there is an increase in college enrollment. Can it explain the fall in the working participation rate, workforce participation rate? And author has analyzed this for the two time periods. There's a time period from 2004-5 to 2011-12, and there is a time period from 2011-12 to 2017-18. And they say that if you look at the first period, 2004-5, 2011-12, yes, in that case, the proportion of the student population to the total population is increasing. So that can explain, yes, the working force participation rate for male and female has been falling. अब जब वो पढ़ रहे हैं ज्यादा, स्टूडेंट की प्रोपोर्शन भी ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन में, वो भी बढ़ रही है, तो नेचुरली वो उस समय काम तो कर नहीं रहे, तो जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मेल और फीमेल का वो गिर रहा है. तो ये तो एक बात हुई. लेकिन 2011-12 से 2017-18 के बीच में अगर आप देखें, then authors they have estimated that for male labor force, the percentage of the student to population ratio, is declining. It is declining from 29.6% to 28.5. For females, it is declining from 25 to 24.6. इसका क्या मतलब है? जब proportion of students गिर रहा है total population में, तो इसका मतलब है कि वो उस समय education के लिए time नहीं लगा रहे. They are not putting their time for education. It means that they can work. But even if labor force participation rate is declining, so just school enrollments, etc., they cannot explain the falling workforce participation rate. This is what they are trying to say, right? So वो ये कहते हैं कि this fall is due to the slowing down of the growth of young population. Young population की जो growth है वो ही कम हो गई है as compared to the growth of the older population. ये है. So ये जो workforce participation rate है जो कि fall हुआ, ये स्टूडेंट की जो प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन में, ये एक इंक्रीज होने की वजह से ये एक पीरियड को तो एक्सप्लेन करता है, बट दूसरे पीरियड को एक्सप्लेन नहीं करता. इन द सेकेंड पीरियड इट इज द स्लोइंग डाउन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द यंग पॉपुलेशन. यंग पॉपुलेशन की अपनी ग्रोथ ही कम हो रही है, राइट, कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन, राइट. अच्छा, दूसरी बात भी उन्होंने बहुत सुंदर कही. थॉमस साहब कहते हैं कि आप सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एनरोल करा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी स्किल्स बढ़ गई, ह्यूमन कैपिटल बढ़ गई. जस्ट बिकॉज यू आर एनरोल्ड in some education institute, it doesn't mean that your skills have developed, human capital has been created. No, right? So in India particularly, we have found this, that yes, school enrollment ratios have been increasing, college enrollment ratios have been increasing, but there are concerns about the quality of teachers, the adequacy of teachers, the infrastructure, education infrastructure, learning outcomes of the people in large number of schools and colleges, they have been falling. आप आए किस लिए थे, आप सीख के क्या निकल रहे हैं कॉलेज से? इतने सारे अंडरग्रेड्स निकलते हैं, ग्रेड्स निकलते हैं. आर दे suitable candidates for the labor market? Are they suitable candidates for industry? That is questionable. और यही वो बात आती है कि क्योंकि कुछ साल स्कूल में, कॉलेज में बिता दिए गए हैं, तो अब ये इच्छा जागृत होने भी इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि मुझे अब अच्छी ही जॉब मिलनी चाहिए. आई शुड बी गेटिंग बेटर जॉब. दैट्स ट्रू आल्सो. आई एम एजुकेटेड, राइट? So they have greater aspirations for securing a regular job with a decent pay. This is what they want. So this is about the labor supply. Labor demand he has discussed in detail, right? Labor demand के कई रूप में उन्होंने बात करी है. सबसे पहला तो वो ये कहते हैं कि वो अपने आप से पूछते हैं,
वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, साइज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर सप्लाई का नेचर भी चेंज हो रहा है, बिकॉज यूथ आर गेटिंग एजुकेटेड, they would want to have better jobs, decent jobs, regular paid jobs. So how is labor demand functioning to these changes? I mean, how is labor demand responding to these changes? तो वो कहते हैं चलो सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल इकोनॉमी की ओर ध्यान देते हैं, लुक एट दैट। वो कहते हैं कि अगर आप दो एनएसएसओ के सर्वेस को देखें, 1999 2000 एंड 2004-5 एनएसएसओ सर्वेस को देखें, तो आप कहें आप पाएंगे कि जो रूरल इकोनॉमी थी दैट वाज गोइंग थ्रू क्राइसिस, उसमें प्रॉब्लम्स थे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कम हो रहा था, जो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल इनकम्स थी वो ज्यादा नहीं हो रही थी, रूरल वेजेस ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी, और फार्मर सुसाइड्स रैम्पेंट थे। ये दो टाइम पीरियड्स के बीच की बात है। एनएसएसओ का सर्वे 1999-2000 में हुआ और 2004-5 में, राइट। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि इसी एनएसएसओ सर्वे में आप ये भी पाएंगे कि जो फीमेल की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इन एग्रीकल्चर, इट हैज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि अगर मेल, आई मीन दे कैन बी वेरियस रीजंस, राइट। वन, इट इज डिस्ट्रेस ड्रिवन। तो अगर आप रीड करें तो आपको लगेगा शायद मे बी because of the farmer suicides, and if there is no other male member, you have to go and work, right? You have to go and work and support your family. So it's a distress driven thing, mainly to supplement household earnings. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी इसलिए फीमेल ने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करना स्टार्ट कर दिया, नथिंग लाइक दैट। सो दीज आर द व्यूज। फिर 2009-10 और 2011-12 के एनएसएसओ सर्वे के बारे में उन्होंने बात करी। कहते ये तो देखिए, जो पहले दो राउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, 1999 2000 और 2004-5 में रूरल इकोनॉमी वाज गोइंग डाउन, देयर वाज अ क्राइसिस। बट फ्रॉम 2009-10 एंड 2011-12 सर्वेज, again they are on the path of recovery. Rural economy is on the path of recovery. एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ रही थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होनी ज्यादा हो गई चालू। गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के द्वारा बहुत गवर्नमेंट स्पेंडिंग करी रूरल इकोनॉमी में, रूरल एरियाज में। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, भी एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ गई है रूरल एरियाज में, तो जो जो क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ रही है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड होना चाहिए था एग्रीकल्चर में, हुआ नहीं है। बिकॉज ऐसा ही होता है ना, दैट व्हेन income in one of the sector it increases, it creates a pull towards that. So when agricultural income was increasing, it has not created that pull. In fact, the employment in agriculture and allied activities, it fell. Author ने अपने estimates निकाले for 2004-5 and 2011-12 एनएसएसओ राउंड के लिए। उन्होंने कहा जो टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर है वो 258.8 मिलियन से 224.5 मिलियन हो गई। और ये कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पहली बार एब्सोल्यूट नंबर्स फॉल कर गए एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट के, पहली बार एब्सोल्यूट नंबर्स फॉल कर गए। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था जब एब्सोल्यूट नंबर्स ही फॉल कर गए, कितने लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं इस बारे में। उन्होंने फिर एक और कंपैरिजन भी करके दिखाया। उन्होंने कहा आप अगर देखें कि कितने लोग एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज में हैं अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज अपॉन टोटल वर्कर्स, तो आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का फॉल है वो भी 2004-5 2011-12 से गिरता जा रहा है। 56.5%, 47.5%, 41.9% कम हो रहा है।
चाइना के कुछ डिफरेंट ईयर्स में भी आप मतलब मोरलेस यू विल फाइंड द सेम थिंग, 50 से 34, 34 से 26, लेकिन जो उनका फॉल है, चाइना का फॉल है इन एग्रीकल्चर, वो बहुत रैपिड है। लेकिन हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट का फॉल है, फॉल तो है लेकिन ऐसा रैपिड नहीं है। 56 से 41 हुआ है, 50 से 26 नहीं हो गया, राइट? ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। हाँ? हमारे में ऑलमोस्ट हाफ नहीं हुआ है। सो अभी तक हमने यहां तक देखा है। इसके आगे हम बात करेंगे कि लेबर डिमांड के और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पुल फैक्टर्स क्या हैं, पुश फैक्टर्स क्या हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग रिटन बाय Jayan Thomas. So we'll take the discussion further in the next class. I hope this is helpful to you. Thank you, Beta. Make your own notes, right? You will definitely have to write your own notes. So don't just मतलब कुछ भी आया तुमने बस यही पॉइंट्स लिखने चालू कर दिए, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये जो नोट्स हैं ये आपको रीडिंग समझाने के लिए हैं, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करना। डोंट आंसर एनीथिंग अंडर द सन, वो मत करने लग जाना, इंटेलिजेंटली आंसर। सो तुमको ये इसलिए दिया गया है कि तुम रीडिंग जब अपने आप से पढ़ोगे तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा, बट यू विल हैव टू राइट इट। और जो क्वेश्चन आएगा प्लीज सिर्फ उसका आंसर दीजिएगा, राइट? चलिए, थैंक यू बेटा।